Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss finite simple groups through some non-simplicity test, and then at the end of this lecture, we will discuss generalized Cayley's theorem. Before going to the main test, let me write some important statements which are useful throughout this lecture. So first one is about the uniqueness of Silo's theorem. ये जितने भी statement है, we have already discussed these statement. अभी हम जब इन theorems के इन statements की proofs को discuss करेंगे तब वहाँ हम इनको use करने वाले हैं. ठीक है. So first is about the uniqueness of Silo's P subgroups. So we know we have already proved this that unique Silo subgroups are normal. Okay. जब कभी भी हमारे पास किसी भी प्राइम पी के लिए सिलो पी सब ग्रुप यूनिक है, केवल एक ही हमारे पास नॉर्मल पी सब ग्रुप है, तो उस केस पे वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा. ओके, आर नॉर्मल. देन सेकंड इज अबाउट द सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप. ओके, सो एनी सब ग्रुप H of Sn contains either all of its element as even permutations, or H has half of its element as even permutations. ओके. अगर हमारे पास सब ग्रुप है सपोज 20 ऑर्डर का, एसएन में 20 ऑर्डर का एक सपोज कर रहे, 20 ऑर्डर को कोई एक सब ग्रुप है, तो वो सब ग्रुप का या तो 20 के 20 एलिमेंट्स से इवन परमुटेशंस होंगे, या फिर इन 20 में से 10 एलिमेंट्स इवन होंगे और बाकी 10 ऑड होंगे. ठीक है. ऐसा कभी सिनेरियो नहीं होगा कि आउट ऑफ 20 एलिमेंट्स वी हैव 15 एलिमेंट्स as even permutations and the rest 5 elements are odd permutations. ऐसा कभी हमें सिनेरियो नहीं मिलेगा. So this is another important statement. And third is about any subgroup of index 2. So let G be a group, then any subgroup of index 2 in G is normal in G. ठीक है. तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिनको हम यूज़ करने वाले हैं. अभी जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो सारे स्टेटमेंट हमें बताएंगे कब कोई एक ग्रुप सिंपल हो सकता है या फिर कब कोई एक ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता. ठीक है. सो लेट मी राइट द फर्स्ट थ्योरम एंड इट इज थ्योरम 25.51. Okay, this is from Joseph Galian book. So it says about, we will call this theorem is Silo test for नॉन सिंप्लिसिटी. ये हमें बताएगा कि कब कोई ग्रुप सिंपल नहीं है. ओके, सो इट सेज let n be a positive integer which is not prime. Okay, and let small p is a prime divisor of n. Now if 1 is the only
divisor of n that is equal to that is equal to 1 modulo p, then this is the conclusion. Then there does not exist a simple group of order n. Okay, let me write the proof, and before proceeding for the main proof, let me establish an understanding with this statement. So we have a positive integer n which is not prime. Then we are considering any prime divisor of n, and suppose 1 is the only divisor of n that is equal to 1 modulo p. ओके, 1 के बारे में खास बात क्या है कि हर एक नंबर को हमेशा ये डिवाइड करता है, तो 1 हमेशा हर नंबर के लिए डिवीजर है. दूसरा, कोई भी प्राइम लेंगे देन 1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p. ठीक है, फॉर एनी प्राइम p हमेशा ऐसा सिनेरियो होगा. तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर n ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उस n के डिविजर्स में से केवल 1 ही एक ऐसा डिवीजर है जिसके लिए हमें ये रिलेशन मिल रहा है, ये कॉन्ग्रुएंस अगर हमें मिल रहा है, तो हमें n ऑर्डर वाला कोई भी सिंपल ग्रुप नहीं मिलेगा. दैट मीन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ग्रुप हुज ऑर्डर इज n. ठीक है. For example, if you consider n equals to 6, then we have divisor of this n would be 1, 2, 3 and 6, right? Now you can consider this 3 as a p. Then you can see except this 1, we do not have any divisor of this n equals to 6, so that we can write something that divisor is congruent to 1 mod 3. Okay, because 2 is congruent to 2 mod 3, 3 is congruent to 0 mod 3, then 6 is congruent to 0 mod 3. So this is the only divisor of this 6 which has this relation 1 mod p. So we can conclude that 6 ऑर्डर का कभी भी हमें सिंपल ग्रुप नहीं मिलेगा, या फिर अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो वो कभी भी सिंपल नहीं हो सकता. ठीक है. अब सिंपल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एटलीस्ट एक. तो ये बात है इस टेस्ट के बारे में, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज सीलो टेस्ट फॉर नॉन सिंप्लिसिटी ऑफ ए ग्रुप. ठीक. आई होप यू मस्ट क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ सिंपल ग्रुप. सिंपल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिनके लिए प्रॉपर नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना कर रहे हो. ठीक है. सो लेट मी राइट द प्रूफ, एंड फॉर द प्रूफ वी विल कंसिडर 2 सिनेरियो. सो लेट मी राइट दैट. सो लेट n be a non prime positive integer and p be a prime divisor of n. Now suppose 1 is the only divisor of n that is equal to 1 modulo p. ठीक है. कहने का मतलब क्या है, सपोज अगर हमारे पास ऐसा कुछ है दैट समथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p. ठीक है, हमने ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये जो भी कैंडिडेट है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 1. ये कहने का मतलब ये हो गया इस सपोजिशन का. ठीक है. नाउ वी हैव 2 केसेस. देन वी हैव 2 cases. First is, you can write first one as case 1 when n is of the form p to the power k, where k is some
पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने p को इसका डिवीजर लिया तो ये इसी फॉर्म का है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, दैट n इज ऑफ सम प्राइम पावर। ठीक है, दैट इज n इज ऑफ प्राइम पावर। दैट इन दैट केस हमें ये एक स्टेटमेंट हमने प्रूफ किया था कि जब कभी भी n प्राइम पावर ऑर्डर का है तो उस केस में वी हैव अ नॉन ट्रिवियल सेंटर। ओके, और हर एक ग्रुप G के लिए आपको ये चीज़ पता होगी दैट हर एक ग्रुप G के लिए जब हम इसके सेंटर की बात करेंगे ZG, सो दिस ZG इज ऑलवेज नॉर्मल इन G। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी एन किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में है तो ये जेड जी हमेशा नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसके अंदर एटलीस्ट पी एलिमेंट्स होंगे, एटलीस्ट पी एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स अगर n का इस g का ऑर्डर n है वेयर n इज p टू द पावर k, देन दिस ZG इज नथिंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ रहा हो, ऐसा हमें नहीं होगा। ठीक है,